मेरे चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। तो आज हम बात करेंगे मीटर ब्रिडेज एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स हॉस्टल का वाईफाई क्वेश्चन। कौन कर रहा है? व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ विच स्टोन ब्रिडेज देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई। व्हाट इज कॉल्ड ब्रिडेज? गैल्वेनोमीटर वार्म arm work a bridge between the point at equal potential when bridge is but the Wheatstone bridge is most sensitivity when all four resistors are the same order. That is name of your apparatus. Meter bridge a post office box as a case may. Why it is called meter bridge? 1 meter long wire used in it. Its work is based upon the principles of Wheatstone bridge. The resistance P, Q, R, S are connected. The resistance PQR in the ratio arms R is known, arm S is unknown. What material wire of bridge is made of? Constant and manganese. What should be character of the materials of wire? पहला है हायर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो दूसरा है लो वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वाई वायर इज नॉट मेड अप ऑफ कॉपर या आयरन, तो इसका आंसर है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज लो और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बोथ कॉपर एंड आयरन आर हाई। वाई थिक मेटेलिक स्ट्रिप आर यूज? पहला इन प्लेस ऑफ कनेक्टिंग वायर इन ए मीटर ब्रिज। आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस of these parts, strips or wires are not taken in actual calculation. Hence, these must be small as possible. Length between two connecting points for both strip and wire will be same, but cross sections area of strip will be more, so that resistance of strip will be much low as compared to. What do you mean by a specific resistance? What is its unit? Resistance of one semi long wire having cross section area 1 semi square is called a specific resistance of materials of wire. Its unit is ohm semi. Question number 12 है why observation also taken by interchange positions of resistance box and unknown. It may be possible that the end of wire does not exactly coincide. Scales या edge of the jockey is not exactly line of point. Estimate these effect observation also taken by interchanging resistance box and unknown resistance.